नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीबाउंसिंग के बारे में, खासकर रिएक्ट नेटिव में। हम एक उदाहरण और सैंपल कोड के साथ समझेंगे कि डीबाउंसिंग कैसे काम करता है और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, डिबाउंसिंग का इस्तेमाल क्यों करें? जब आप कोई यूजर इनपुट लेते हैं, जैसे कि सर्च बॉक्स में टाइपिंग, तो हर की प्रेस पर एक एपीआई कॉल होती है। इससे परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। डिबाउंसिंग से हम ये एपीआई कॉल्स को कम कर सकते हैं, जिससे ऐप स्मूथ और फास्ट चलता है। मान लीजिए मैं एक सर्च बॉक्स में टाइप कर रहा हूं, हर की प्रेस पर एपीआई कॉल हो रही है, लेकिन डिबाउंसिंग के साथ ये कॉल्स लिमिटेड हो जाती हैं और परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इस तरह से यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है। So let's dive into the implementation of debouncing in React Native. It's a technique used to limit the rate at which a function is executed. By using debouncing, we can improve performance and enhance user experience. Here's a simple example to illustrate debouncing in action. We'll use a debounce function from a utility library like Lodash. First, we import the debounce function. Then, we wrap our event handler with this debounce function. This ensures that the event handler is not called too frequently. That's right. And remember, the key part is to set an appropriate delay time. Too short and it won't be effective. Too long and it might feel unresponsive. Finding that balance is crucial for a smooth user experience. In conclusion, debouncing is a powerful technique to optimize performance in React Native applications. By controlling the frequency of function execution, we can prevent unnecessary operations and enhance the overall user experience. So, give it a try in your next project and see the difference it makes.